Hello, welcome to the part 2 of chemical reactions. So here we will discuss the rest part of the chapter 1, that is chemical reactions and equations. तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं. जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसको हमें नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस होता है. केमिकल चेंज के टाइम पे ये बोलते हैं. नॉर्मली केमिकल चेंज जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस ही है. दीज आर वेरी सिमिलर थिंग्स. तो अभी जो ये केमिकल रिएक्शंस है उसको हम कैटेगराइज करते हैं. तो वो ब्रॉडली हम लोग 5 कैटेगरी में डालते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई हैव गिवन one category is combination reaction, another is decomposition reaction, another is displacement reaction, another is double displacement reaction, another is oxidation and reduction. So let's understand what is chemical reaction, what happens there. Okay, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. During a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. So ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शंस है क्या. तो केमिकल रिएक्शंस में मैं पहले बताई थी कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं. जो प्रोडक्ट्स हम लिए हैं रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स लिए हैं उसके प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं. बट वहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट का कोई कन्वर्शन नहीं होता है. इट्स नॉट लाइक कि द ऑक्सीजन नाउ ट्रांसफर्स इनटू द ऑक्सीजन बिकम्स नाइट्रोजन. ऑक्सीजन विल बी ऑक्सीजन देयर ओनली. सो ओनली देयर बॉन्डिंग थिंग चेंजेस, राइट. सपोज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके हमें वाटर दिए हैं. अभी वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा. बट ऑक्सीजन कभी नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा ये नहीं होगा. ये हाइड्रोजन कभी दूसरा क्लोरीन में चेंज हो जाएगा ये कभी नहीं होगा. जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, वो अपना प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं. पर वो जो एटम्स के बिटवीन जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए वो चेंज हो जाती है. दैट्स वाई वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. क्लियर. नाउ अभी ये जो सारे केमिकल रिएक्शंस है उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक है डिकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट, देन डबल डिस्प्लेसमेंट, देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अभी हम ये सारे रिएक्शन के टाइप डिटेल में जानेंगे और हम वीडियोस भी देखेंगे कि वो सारे जब रिएक्शंस होते हैं जो मैं एग्जांपल्स ली हूँ वो एक्सपेरिमेंट में आपको वीडियोस के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स सी. और उसके अलावा जो सारे रिएक्शंस हैं उसको हम हीट के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक हुआ एक्सोथर्मिक और एक हुआ एंडोथर्मिक. दैट मीन्स कुछ रिएक्शंस के लिए हमें हीट देना पड़ता है. जैसे कि हमें वुड को जलाना है तो फिर वी प्रोवाइड हीट, करेक्ट. और कुछ रिएक्शंस के लिए हम हीट कंज्यूम करते हैं. दैट मीन्स हीट जनरेट करता है और कुछ रिएक्शन में वो हीट जनरेट करता है, करेक्ट. तो कुछ रिएक्शन से दैट इज हीट जनरेटिंग और कुछ रिएक्शन से दैट इज हीट कंज्यूमिंग. दे नीड हीट. तो जो रिएक्शंस में हीट जनरेट होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और जो रिएक्शन में हमारा हीट कंज्यूम होता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. तो इसके बारे में हम एंड पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. So here we will discuss about combination reactions. तो ये combination reactions के कैटेगरी में वो सारी चीज़ें आते हैं, वो सारे reactions आते हैं जहाँ पे more than 1, 2 or more substances, elements or compounds, they combine to form a single product. यहाँ पे हमारे reactions के नंबर more than 1 होगा और वो सारे reactions के बाद एक ही प्रोडक्ट हमें दे रहे होंगे. तो फिर हम उसको बोलेंगे combination reactions because here the compounds or the elements they combine to give a single product. Okay, so here it is experiment 1 and here what we do, calcium oxide में हम water add करेंगे. तो यहाँ पे हमें एक slaked lime नाम का एक compound मिलेगा. So let's see what is that equation and how to do that experiment. You take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker. Slowly add water to this. Now touch the beaker and you see what happens. So see,
यहाँ पे क्या होता है कि हम कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे, ये सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम, तो क्विक लाइम में हम अभी धीरे धीरे वाटर ऐड करेंगे। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो वो बीकर गर्म हो जाएगा। पहले वो उसका टेम्परेचर लो होगा, तो अभी उसका टेम्परेचर तुम चेक करोगे तो इट विल बी लिटिल बिट हायर। तो अभी स्लेट लाइम यहाँ से जो मिलता है उसको हमें क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म, और उसको हम बोलते हैं स्लेट लाइम। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो रिएक्टेंट मिलके हमें एक प्रोडक्ट दिए, करेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और हमें एक्स्ट्रा हीट मिला यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शंस हुआ तो इसका और थोड़ा एक्सटेंशन है कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग आवर वॉल्स। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gets a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also calcium CaCO3. This is called calcium carbonate. So यहाँ पे हम नॉर्मल जो था क्विक लाइम लिए, उसमें हम लोग वाटर ऐड किए एंड वी यूज दैट फॉर पेंटिंग आवर वॉल्स। तो हम जब अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पेंट में यूज़ किए हैं, अभी एयर पे है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो जब एयर का कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का शाइनी वाइट कलर है, राइट। सो we see that our walls now turns very white, correct. Now it's a solid form, calcium carbonate is in solid and H2 is the liquid that evaporates from the wall. Now let's discuss some more examples of combination reactions. So it's like you can see burning of coal. तो हम अभी कार्बन के जो सब्सटेंस है और कार्बन प्लस उसमें ऑक्सीजन, उस कार्बन और ऑक्सीजन वो मिलके हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सो कार्बन रिलेटेड सब्सटेंस जैसे कि पेट्रोल, डीजल, और यू कैन से द वुड, सो यू कैन जस्ट से दैट। सो कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें वाटर देगा, राइट। So this is combination reaction because here you can see more than one reactants and we are getting one product. Then decomposition reaction. So this is the opposite of combination reaction, composition reaction. Combination reaction, I'm sorry. So decomposition is just reverse of that. That means वहाँ पे हमें दो reactants और more than two reactants मिलके हमें एक product देते थे, यहाँ पे एक single reactant break होके simpler products देगा, okay? So that is called decomposition reaction. So a single reactant breaks down to give simpler products. तो अभी यहाँ पे हम बहुत सारे experiments को देखेंगे. Those are very interesting and as well as important. Electrolysis of water, it is very important because okay, we will see what is there. And here we will be just reading about all these 5 experiments and I will show you the videos for which it is available. So let's see. Heating of ferrous sulphate crystal. So ये for ferrous sulphate crystal. So ये crystal में, and you just see what is there. In this reaction you observe that a single reactant breaks down to give simpler products. So that is decomposition reaction. This is a decomposition reaction. Ferrous sulphate crystals. So this ferrous sulphate is bonded with 7 water molecules and this bonding gives it this color. You can see the ferrous sulphate color. So this, when we hit it, when we hit the crystal, then we lose this water component. So when you hit it, you lose water and the color of the crystal changes because the color is because of this, the bonding of the ferrous sulphate with H2O that forms the crystal. Now if we hit it, then we lose that water. Now we get
ferric oxide from it. Okay, so you can see FeSO4 and you just can put it comma and H2O, then we heat it, then the water part evaporates. Now we get ferric oxide and two other gases, that is sulfur dioxide and sulfur trioxide. सो यहाँ पे ये हमें ब्लूइश कलर का है, अभी हम उसको हीट करेंगे तो हमें ये से ब्राउन कलर की हमें कंपाउंड मिलेगा. ओके, दैट इज फेरिक ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड, फिर उसके साथ उससे हमें गैसियस फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल जाएगा. सो इट्स अ सिंगल कंपाउंड एंड इट इज गिविंग अस 3 सिंपल other compounds. Now let's see how it looks in the lab. A decomposition reaction is one in which a single react. You just can see because we know what is decomposition reaction, right? So this is ferrous sulphate. Okay, so you can see its color. Now you see we are going to heat it. So this is the burner and we will hit the ferrous sulphate and you see the color is changing, right? And from it those gases are evaporating. We cannot see that, but you can see the color is changing gradually. So yes, so that's it. So this is the reaction, that is ferrous sulphate, and when we heat it, the ferric oxide, we get ferric oxide and its color is something like this, or you saw that in the video, it's something like blackish, but if you see inside it then you will find it is somewhat like this. Okay, now we go to next. So the next one is heating calcium carbonate. This is also another example of decomposition reaction. So calcium carbonate is CaCO3. We call it limestone as well, or this is the symbol of marble as well. So when we heat it, we get quicklime, that is CaO and carbon dioxide. So we have seen these things before, right? Their calcium hydroxide was reacting with carbon dioxide and we were getting calcium carbonate. So this is just the reverse thing. So decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and calcium dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Okay, this is a very important reaction that we use in various industries. So this is mainly used in cement manufacturers, mainly use this reaction. Okay, so calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is in the manufacturing of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition because you just give the heat to initiate that reaction, right? हम यहाँ पे heat दे रहे हैं कि वो डिकम्पोज कर जाए. सो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. अभी हम देखेंगे हीटिंग lead nitrate. It is a very interesting one. Just see, lead nitrate is PbNO3 and here it is 2. So this is the valence and you know how these things comes, right? So you will see that we will get nitrogen dioxide, we will come out of it. Okay, when we will heat lead nitrate, then we will get lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. So nitrogen dioxide, it is a fume that is brown in color. Okay, so we can identify that when we will see those things in lab. We can see that nitrogen dioxide is coming out of it and you just see what are the remaining things. Oxygen will move away, the solid is lead oxide that will be in the test tube. So let's see how it looks in the real lab. Certain chemicals when heated to. So you just see how it looks. See, so this is the test tube and they are taking, so inside that they will take the compound that is lead nitrate, and now it will get heated using the burner. So let's forward it, fast forward it. Yes, now you can see is heating, and after heating you can see the brown fumes, right? It is collected in a beaker, correct? So you can see how the things are happening, correct? So this is a decomposition reaction because lead nitrate is heated to give 3 components, 3 different compounds, right?
It is lead nitrate and nitrogen, and this is a element, that is oxygen. Then we will go for electrolysis of water. So electrolysis of water, what is electrolysis of water? So electrolysis of water is decomposition of water into oxygen and hydrogen by passing electricity through water. So here we use electricity to initiate that reaction. And see, initially we have seen that oxygen and hydrogen, they reacted to give water. Now we will get hydrogen and oxygen from it, and we will just see for that we have to provide some electricity. We have to pass electricity through the water. So first let's understand how to, let's see, you just see the experiment, then I will explain how to do it, so everything will be clear. So just before that, you see a battery is connected, and these are a few important concepts. You just remember, the battery is connected, and you have always seen that there is a positive and there is a negative end. So the wire that is connected to the negative, it is called cathode. The wire that is connected to the positive, it is called anode. So this is positive and this is negative. Cathode is negative. So because this is negative, it attracts positive ion, right? Opposite charges, they attract each other. So the negative, the cathode is negatively charged, so it attracts positive ion. So those are positive ions are called cations, but cathode is negative. So anode is positive and it attracts negative ions, okay, minus charged ions, and these minus charged ions are called anions. Clear? Now see what is that, how this experiment looks like, then I will tell you how you can just do the experiment. Now you see, this is a kit, ready-made kit, and you can see how they are going to do it. So यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम वाटर लेंगे और वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास कराएंगे. हम उसके थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे वो देखेंगे. जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जो इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के हिसाब से हमें वहाँ पे दो गैस मिलेगा, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन. तो वो सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वी विल ट्राई टू कलेक्ट, एंड हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन खुद जलता है और जो ऑक्सीजन है वो जलने में हेल्प करता है. सो वी कैन जस्ट चेक दोज थिंग्स एंड यू जस्ट हैव अ लुक एट द एक्सपेरिमेंट. सो हियर he is doing all the setups to collect the gas so that he can check. Okay, now उसके यहाँ पे you can see this is normal water, and sodium hydroxide is used to increase the conductance of the water, right? It is a, water is normally a bad conductor, so if we add some salt or acid, then it becomes a good conductor of electricity. So that fast forwards the chemical reaction, I mean that electrolysis process becomes fast forward. So now you see here we are using these two bottles to collect the gases. Okay, now it is, the battery is connected to the two different electrodes that I have seen. Now you can see the gas is coming, right? So in one end we are getting hydrogen, in another end we are getting oxygen. So hydrogen is H plus, so that will go to the cathode, right? Cathode is negatively charged. So at the cathode, the point which is connected to the negative end of the battery, there we will get hydrogen gas, and the point which is connected to the positive end of the battery, that is the anode, there we will get the oxygen gas, because oxygen is negatively charged, right? H is H plus and oxygen becomes O2 minus easily. So you just can see we are going to collect the gas, and we just can check that, and you just bring a burning candle near to hydrogen. You will see that gas itself that burns. Okay, the gas catches fire, and you see that when you take it near oxygen, then the flame will be higher, like because oxygen helps in
oxygen helps in burning. I mean, it helps in burning, and you can see this is hydrogen is filled and it moves up, right? So that is the thing, and you saw how this thing happens. So let's see. So this is anode. At anode we get oxygen, at cathode we get hydrogen. So why this is happening? Because cathode is connected to negative end, anode is positive, and for negative we get positive ions attracted for the negative cathodes, for the negative electrodes. So here we get hydrogen and here we get oxygen, and rest of the things you have already seen. So these electrodes are graphite rods here, and in that case I think those are metal rods or something. So yes, you can then connect to the 6-volt battery, and let's see how to do that. So you take a plastic mug, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in the holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in the figure. So you can see this is a plastic mug, यहाँ पे 2 होल्स हुआ है और यहाँ पे हम रबर स्टॉपर ऐड किए हैं. इसके थ्रू हम इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करेंगे. फिर उसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे. So you just okay, then you just let's go step by step. Then connect these electrodes to a 6-volt battery. So you take a 6-volt battery and connect the positive end to 1 and the negative end to 1. So where the positive end is added, it is anode. Where the negative end is added, that electrode is called cathode. Then fill the mug with water such that the electrodes are immersed, and add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. So we are adding sulfuric acid or any kind of base so that it increases the conductance of the water. Otherwise water is a bad conductor, right? To make it a good conductor we add acid so that the flow of electricity becomes faster. So now take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स. तो यहाँ पे जो 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स है उसके ऊपर हम फील्ड टेस्ट ट्यूब को लेके इन्वर्ट करके रखेंगे, ठीक है. और जैसे हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे यहाँ पे वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और ये डिस्प्लेस करेगा वाटर को, ओके. सो H2O, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मिलेंगे और 1 मॉलिक्यूल, 1 atom oxygen के मिलेंगे. So you can see the volume difference here, okay. So in the experiment we saw that after 1 hour एक जो polythene था वो fill हो गया था और एक fill नहीं हुआ था. So that is the volume difference. Because of hydrogen we are getting two atoms, and in case of oxygen this is only 1. Now take now you just, these are the things that we can see, that switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. So this is the thing, like these are the steps I have just shown you and I have just explained you, okay. So how to check whether it is hydrogen or oxygen? So we have to bring a candle, and we will see that if we will take it near to the hydrogen gas itself burns, hydrogen gas catches fire. And if we take it near oxygen, the flame will be higher, the candle's flame will be higher, because oxygen helps in burning the things. Okay, now we go to the next experiment. So it is silver chloride in sunlight. So silver chloride एक कंपाउंड है जिसको हम सनलाइट पे लेंगे तो फिर वहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाएगा. सो यू कैन सी इट इज़ AgCl, दिस इज़ इन सॉलिड फॉर्म. उसको हम सनलाइट में रखेंगे तो यहाँ पे हमें सिल्वर मिल जाएगा और क्लोरीन गैस जो है वो निकल जाएगा, ठीक है. तो वी कैन सी द कलर चेंज. सो यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रीन in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. तो ये sunlight के presence में ये decompose कर जाता है. Now see displacement reaction. So let's understand what is displacement reaction. So the thing is in the word, in that name itself, displace. So it displaces, right? Here a single displacement reaction is a chemical reaction in which one element replaces other element in a compound.
So this will most often occur if one element is more reactive than other. So हम देखते हैं कि अगर एक कंपाउंड है और उसमें हम और एक एलिमेंट ऐड किए, अगर जो एलिमेंट ऐड किए वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो रिप्लेस कर देगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देगा. सो यू सी द एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे हम एक आयरन नेल्स लेंगे, मतलब 3 लेंगे. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. हम 3 आयरन नेल्स लेंगे और कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन लेंगे. तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है यहाँ पे वो ब्लू कलर का है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो 2 आयरन नेल्स को उसमें हम डाल के रखेंगे कुछ टाइम के लिए, एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस. सो इफ यू put these 2 iron nails for some more time, then you will see that this decoloration will happen for the solution. So it is now blue color, the color will change to greenish. So why that happens we will see, and this nail, its color will also change. So let's see the video, then I will explain why this is happening. One of the most common errors to occur in common entrance chemistry. So you just see, this is copper sulfate, okay, this is blue in color. Then we take a beaker and यहाँ पे हम लोग copper sulfate डालेंगे, और इसके अंदर अभी ये जो आयरन का नेल है इसको भिगा के रखेंगे, and you will see after some time the color of the nail will change, right? You can see the change. So it looks like copper getting coated over it, right? So after some more time, so you just put more number of nails inside that solution, we will see that the decoloration of the solution happens. that वो color का जो solution का color है वो धीरे धीरे change होने लगेगा. So you will see those things at the end of the video maybe. So let's wait and watch. अभी उसमें बहुत टाइम तक उसमें डाल के रखेंगे तो फिर इसका कलर ऐसे हो जाएगा, ठीक है. इट्स नाउ ग्रीनिश, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब कॉपर जैसे एलिमेंट्स आ गए हैं. तो अभी हम देखेंगे ये कॉपर है या फिर क्या है, तो हम वो रिएक्शंस देखेंगे अभी. तो वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड एंड यू सी दिस आयरन नेल इज Fe. देन कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है CuSO4. तो ये जो आयरन है वो रिप्लेस करता है कॉपर को, तो ये हो जाता है FeSO4. तो जो सोल्यूशन में आ जाता है FeSO4. नाउ we just separate the copper from here and we get that color because of the accumulation of copper over that nail, okay. और जो कलर है वो आयरन सल्फेट के कलर की वजह से है. So why does the iron nail becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? Because this thing happens, because iron replaces copper, and so copper sulfate, so now the copper sulfate is changing towards iron sulfate. That's why we get a change in color, and because we are getting copper deposited over the nail, so we are getting a copper like color of the nail. So in this reaction, iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution, and this reaction is known as displacement reaction. So other examples you can also see, that is zinc with copper sulfate, then it gives zinc sulfate here, and copper gets displaced. Then lead plus copper chloride, it gives lead chloride and copper. So zinc and lead are more reactive elements than copper, that's why they displace the copper from its compounds. So more reactive elements, they replace the less reactive elements. Now we go to the next one. So it is double displacement reaction. So what is double displacement reaction? So there you saw it is single displacement, right? It just displacement, the ferrum displaced copper and it took the position of copper. So now double displacement is like, see, in every compound we have a positive and negative ion, right? So here you see, suppose AB is a compound and CD is a compound.
Suppose A is the positive ion, B is the negative ion. Here C is the positive ion and D is the negative ion. Now A and D, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव ये मिल जाएंगे, और इसका जो नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है ये मिल जाएंगे, एंड दे गिव अस different compounds. Okay, so a double displacement reaction, also known as a double displacement reaction, and it's a type of chemical reaction where two compounds react and the positive ions and the negative ions gets exchanged. Okay, so you can just see how double decomposition reaction happens. Now AB becomes AD and CD becomes CB. Now see the example of sodium sulfate and barium chloride. So we take sodium sulfate, 3 milliliter of sodium sulfate in a test tube. In another test tube we take 3 milliliter of barium chloride. Then we mix the solution and we see we get barium sulfate. See here the sodium is plus, Na plus, SO4 is 2 minus, Ba is 2 plus and Cl is minus. So now the sodium gets connected to chlorine, NaCl, and this barium gets connected to sulfate, so it becomes BaSO4 and this becomes NaCl. So you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. So ये जो barium sulfate है, this is not soluble in water, this is a precipitate. So we have earlier seen that lead nitrate thing, there we were getting yellow precipitate, here we are getting white precipitate. So any reaction that produces precipitate, we also call it precipitation reaction. So that is another variety and we call them precipitation reaction. Let's see how it looks in lab. When aqueous barium chloride is added to a solution of sodium sulfate, You see, when we add barium chloride with sodium sulfate, how it looks. We are getting white precipitations, right? Now we will go to the next one. So what causes this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of the sulfate ion and the barium ion, correct? So the other products formed is sodium chloride, and it actually the normal salt, right? Sodium chloride, it gets dissolved in the solution. So that is about the double displacement reaction. Now you see oxidation and reduction. This is very important because in our normal life also we see the examples of oxidation and reduction. So let's see what is it. So oxidation और reduction ये हम जज कर सकते हैं दो पॉइंट के बेसिस पे. एक है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट पे हम देख सकते हैं और एक है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में. तो वो क्या है चलो देखते हैं. तो ऑक्सीडेशन का मतलब है अगर तुम्हारे जो रिएक्शन हो रहे हैं उसमें कोई एक कंपाउंड में ऑक्सीजन गेन हुआ और जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन गेन किया, तो हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ. और जो कंपाउंड और जो एलिमेंट ऑक्सीजन लूज किया उसको बोलते हैं वो रिडक्शन हुआ. ओके, सो ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन ऐड होना, रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन डिडक्ट होना, करेक्ट. सो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन से कौन दूर जा रहा है, राइट. सो उसके हिसाब से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं. सो यू सी हियर दिस इज फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ये जो रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे Fe2O3, यहाँ पे पहले 3 ऑक्सीजन था, अभी ये सिंगल हो गया, राइट. यहाँ पे आयरन मिल गया हमें. और फिर जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे हमें मिला CO2. तो कार्बन मोनोऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका नंबर ऑफ कार्बन का जो है इसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, तो कार्बन को बोलेंगे कि हम यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हुआ. और जो यहाँ पे आयरन था इसके साथ जो एटम से ऑक्सीजन के वो रिड्यूस हो गए, राइट. नाउ इट बिकम्स 0, इट वाज 3, नाउ इट इज 0. So we say that reduction happens because it loses the oxygen. तो अभी ये ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हुआ और एक हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी हम देखते हैं. तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ओके, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव में लॉस ऑफ हाइड्रोजन है और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है CH3CH2OH, इसको जब ये जो ऑक्सीडाइज होके
हमें क्या देता है CH3CHO. ओके, ऑक्सीडाइज मतलब यू कैन सी इसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन अभी कम हो गया है, राइट? तो इसका लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ऑल्सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एंड gain of hydrogen is reduction. So you can see CH3CHO अभी इसका रिडक्शन होगा तो ये CH3CH2OH देगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर बढ़ जाएगा. क्लियर? नाउ हम अभी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट इज हीटिंग ऑफ कॉपर पाउडर. हम नॉर्मल कॉपर पाउडर लेंगे और उसको हम हीट करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसके ऊपर एक black coating आ जाएगा. And why that black coating we are getting? Because when we are heating the copper reacts with oxygen that is present in the air. तो अभी हमारा क्या फॉर्म होता है? कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्लैक. सो वी गेट अ ब्लैक कोटिंग ओवर दैट. And if hydrogen gas is passed over copper oxide, अभी आप कॉपर के एक प्लेट लिए, उसको हीट किए, तो उसके ऊपर एक ब्लैक का कोटिंग आ जाएगा. उसके ऊपर अभी हम हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे और हीट देंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस H2O. तो उसका जो नॉर्मल ब्राउन कलर है वो वापस आ जाएगा और वाटर फॉर्म होगा उसके साथ. ओके, नाउ यू कैन सी दैट हियर when copper plus oxygen, that is CuO, then copper got oxidized. अभी CuO के साथ हम H2 ऐड किए, तो यहाँ पे कॉपर से O निकल गया, तो मतलब ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हुआ, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल गए, राइट? अभी हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या है. So redox reaction is where reduction and oxidation, both of the things is happening. So it's obvious that जहाँ पे oxidation एक का हो रहा है तो एक का reduction होगा ही, correct? तो एक का oxidation होता है मतलब वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो वो एक ऑक्सीजन गेन कहाँ से करेगा? तो उसको वो ऑक्सीजन एलिमेंट कोई एक दूसरे रिएक्टेंट से मिलेगा, तो जो रिएक्टेंट से वो ऑक्सीजन एलिमेंट मिलेगा वो रिएक्टेंट क्या होगा? रिडक्शन होगा. So you just can say that when one reactant gets oxidized, the other gets reduced during that reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions or redox reactions. So here you can see that copper is getting reduced and hydrogen is getting oxidized, correct? अभी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ZnO plus C. So it is Zn plus CO. So zinc oxide, here zinc is getting reduced and carbon is getting oxidized, correct? And here also the same thing, manganese is getting reduced and you get hydrogen is getting oxidized and chlorine is getting oxidized because it loses hydrogen, correct? It was initially chlorine was attached with hydrogen, now it loses hydrogen, means it is getting oxidized. Now effects of oxidation reactions observed in daily life. सो ऑक्सीडेशन ये हमारे डेली लाइफ में काफ़ी जगह हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि रॉस्ट ऑफ आयरन, देन रॉस्ट ऑफ अदर मेटल्स. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन. व्हेन वी कीप द मेटल outside, then it comes in contact with the oxygen that is present in air, and that forms the oxides of that metal. Okay, then it makes the surface rough because that deteriorates, because these oxides they gets removed from the surface after some time, so the coating, the metal gets rough, the surface gets rough. So let's understand what is corrosion. So it is a process when metal is attacked by substances around it, such as moisture, acid, so it is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and green coating on copper are other examples of corrosion. Corrosion causes damage to the car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metals, because when metals are normally reactive, when they come in contact with some acids, moisture or oxygen, they react with them gradually and they form different compounds, and now the metals जो प्रॉपर्टी है, वो मेटल का जो प्रॉपर्टी है धीरे धीरे रिड्यूस होगा, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, सो वी नीड रिपेयरिंग, राइट?
So corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace the damaged irons. So corrosion is like when the metal is getting affected by the surrounded factors like moisture, acid, and it gets corroded. So that is called corrosion. Now rancidity. So rancidity is like when fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidation are added to food containing fats and oils. So हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं. जो फैट्स, जो सारे फूड में फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं सो दैट एंड वी कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर सो दैट ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए, राइट. वो फूड ऑक्सीजन के कंटैक्ट में ना आए. तो फिर इफ इट कम्स इन कंटैक्ट विद दैट देन द ऑक्सीडेशन स्टार्ट्स एंड we spoil that food. So do you know that chips manufacturers also use floss bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. Okay, so we fill nitrogens in the packet so that it should not come in contact with the oxygen and the chips should remain fresh. Now we go to the next one, that initially we were discussing something called exothermic and endothermic. So exothermic are like some reactions are there. When that happen, enormous heat generation happens. Okay, we get heat from that reaction. So we just earlier saw हम लोग पहले देखे कि एक कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब वाटर के साथ ऐड करते हैं तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, राइट. और बर्निंग नेचुरल गैस, हम जब नेचुरल गैस को जलाते हैं उससे हमें हीट मिलता है, राइट. तो वी गेट हीट फ्रॉम देयर. सो यू कैन सी दैट द सराउंडिंग इज गेटिंग हीटेड इन exothermic reaction, and in endothermic what happens, the surrounding becomes cooler, right. So surroundings means, okay, it's saying that inside the thing, but you see here heat is released and here heat is consumed. If it is endothermic, it consumes the heat from the surrounding, or we just provide heat. You can say that to initiate that reaction we just provide heat. So endothermic reactions are like it need heat, and you can just say water evaporation, we need heat to make the water evaporate, and cooking food. So these are endothermic and exothermic you just saw. So that's about the chemical reactions and the equations, and we just watched some of the experiments. So thanks for watching, and you just subscribe to our channel so that you can get the updated videos when we post. Okay, thanks for watching. Bye bye.